Assalamu alaikum dear students. I'm your online teacher of grade 2 and is going to teach you English through these online classes. It's our lecture number 16 from the book Junior English. Today the topic of our lecture is verbs, page number 32. As you know, we have done with the concept of verb. What is the meaning of verb? Verb means any action. That word which shows some action are called verbs. For example, eating, sleeping, going, putting, running, playing, etc. But today's topic is slightly different and based on present simple tense. As I have told you, verb has three forms: first form, second form, third form. And in present simple tense, we use first form. What is present simple tense and why we use this tense? We use present simple tense when we talk about our normal routine or our करंट हैबिट. प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई रूटीन की बात करनी हो या हम करंट हैबिट, वो जो काम हम अभी कर रहे हों, उसको डिस्कस करना हो तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं और उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. एंड एज यू नो, विदाउट अ वर्ब our sentence is completely incomplete. वर्ब के बगैर हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है. अब क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और कहाँ पर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस के यूज़ करेंगे. ये चीज़ डिसाइड करती है हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स अ पर्सन हु इज़ डूइंग सम एक्शन. सब्जेक्ट हम उस इंसान को कहते हैं जो कोई काम कर रहा हो, जो उस वर्ब को परफॉर्म कर रहा हो. सब्जेक्ट कुड बी सिंगुलर. सब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक इंसान जो कोई काम कर रहा हो. एंड सब्जेक्ट कुड बी प्लूरल. और सब्जेक्ट जो हैं वो एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो सेम काम को परफॉर्म कर रहे हों. नाउ let's see about the subject. Look at the picture. We have two lists of subjects. First list on the left side is of plural subjects. ये ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं, like I, you, we and they. And with these subjects we use simple first form of verb like do, go, put, run, pull, play, say, try, carry, hurry. These are the simple first forms of verb. And look at the list on the right side. Here the subjects are singular. ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक इंसान को रिप्रेजेंट करता है. ही, शी एंड इट. ही, शी, इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब भी हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, सो वी मस्ट पुट एस और ई एस विद दैट फॉर्म. लाइक डू था सिंपल फर्स्ट फॉर्म, तो क्या बन गया? डज. Go, goes. Put, puts. Run, runs. Pull, pulls. Play, plays. Say, says. Try, tries. Carry, carries. Hurry, hurries. So basically we use simple first form with the plural subjects, and we use first form with s or es with a singular subject.
हम प्लूरल्स के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और सिंगुलर के साथ एस या ई एस वाली फॉर्म यूज़ करेंगे. नाउ लुक एट पार्ट ए, कॉपी एंड फिल इन द मिसिंग वर्ब्स. अब हमारे पास सब्जेक्ट्स गिवन है, सामने हमें सिंपल फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस दी गई है. नाउ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट whether it's singular or plural, we choose the correct verb. Number 1, they. As you know, they is a plural subject. So, which verb we use? Go or goes? Yes, with plural we use simple first form. They go. Number 2, I is also a plural subject, and with plural subject we use simple first form. Try or tries. Which one is the simple one? Yes, try. So, I try. Number 3, he dash. He is the singular subject and used for only one person, so we use first form with s or es. He pull or pulls. क्या आएगा सिंगुलर के साथ? Yes, he pulls. Number 4, you dash. As you know, you is a plural subject, and with a plural subject we use only simple first form of verb. Say or says. Which one is simple? Yes, you say. Number 5, we dash. We is also a plural subject, so we use simple first form with we, like we do. We do not use does with a plural subject. We do. Number 6, she dash. She is a singular subject, and what we use with a singular subject? Put or puts. Yes, we use first form with s or es. So she puts. Number 7, you dash. You is a plural subject as well, and with a plural subject we use simple first form. You hurry or hurries. क्या आएगा? Yes, you hurry. Number 8, it dash. Run or runs. As you know, it is a singular subject. It एक singular subject है जो mostly animals के लिए भी use होता है. So, we put first form with s. It runs. Number 9, I dash. Carry or carries. I is a plural subject, so we use simple first form with I. So we write I carry. Number 10 and the last one, they dash. They is a plural subject, and we use simple first form with this subject, so we write they play or plays. Yes, they play. Revise the topic as it also helps you in making normal sentences. Is that clear? Now look at part B. Write the verb from the list on the left which
will fill each gap correctly. On page number 32, a list on left side is given and you are supposed to complete part B as your assignment, as your homework on this page. आपने इसी पेज के ऊपर पार्ट बी को फिलअप करना है राइट लेफ़्ट साइड पे दी गए वर्ड्स को देखते हुए. Revise this topic. See you in the next lecture. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.